Okay, so here you have water monographs. What are the different types of waters? Okay, so water type, preparation method, then limit for endotoxins and comment. Okay, so it is very important chart for your GPAT Niper. First one is a purified water. What do you mean by purified water? Okay, so it is prepared by distillation and ion exchange, distillation or ion exchange. So purified water. So the endotoxin limit is not applicable for purified water. Then it is used as a pharmaceutical solvent, purified water. ठीक है, प्यूरिफाइड वाटर कैसे बनाएंगे? डिस्टिलेशन से या फिर आयन एक्सचेंज से. तो उसमें एंडोटॉक्सिन लिमिट का कोई ये नहीं है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल है उसके लिए. बाद में उसका यूज है फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट. नाउ नेक्स्ट वन इज वाटर फॉर इंजेक्शन. ओके, सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस. इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है एक बार. सो हाउ वाटर फॉर इंजेक्शन इज प्रिपेयर्ड? इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, रिमेंबर. एंड एंडोटॉक्सिन लिमिट कितना है उसका? लास्ट स्लाइड में भी देखा था अपन ने, 0.25 एंडोटॉक्सिन यूनिट पर ml. ओके, नाउ नॉन स्टेराइल मस्ट बी यूज्ड विद इन 24 आवर्स. ओके, मतलब ये वाटर फॉर इंजेक्शन जो है वो इट इज अ नॉन स्टेराइल. ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज इन अ 24 आवर्स एंड यू हैव टू स्टोर this water for injection. If you want to store, you have to store less than 5 डिग्री सेल्सियस. मतलब एक तो 5 डिग्री के नीचे उसको रखना है अगर बाद में यूज करना है आपको तो, या फिर उसको 80 डिग्री सेल्सियस के अबव रखना है, मतलब उबलता हुआ रखना है. ठीक है, एंड यूज्ड फॉर टर्मिनली स्टरलाइज्ड प्रिपरेशन. सो वाटर फॉर इंजेक्शन डिस्टिलेशन रिवर्स ऑस्मोसिस से प्रिपेयर करते हैं उसको, और उसको इट इज अ नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज इन विद इन 24 आवर्स. अगर उसके बाद तक आपको यूज करना है तो आपको स्टोर करना पड़ेगा. एक तो उसको स्टोर करने के लिए 5 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर मेंटेन करो, या फिर 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन करो, ताकि आप उसको डायरेक्टली टर्मिनली स्टरलाइज्ड पेरेंटरल प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज अ sterile water for injection. So it is again prepared by distillation and reverse osmosis. Again, it should have a endotoxin limit of 0.25 endotoxin unit per ml, and it is single dose container. Sterile water for injection used for reconstitution of sterile solid. So it is also used for जैसे देखो आपका कोई इंजेक्शन होता है, जैसे एंटीबायोटिक का इंजेक्शन होता है मोस्टली. सो द एंटीबायोटिक इंजेक्शन मोस्टली दे आर नॉट स्टेबल एट सॉल्यूशन. मतलब सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका वो उतने देर तक स्टेबल नहीं होता. टू इंक्रीज देयर सेल्फ लाइफ, सो दे आर prepared as a powder form, and their required quantity is present in the vial, and they are ready for reconstitution at the time of injection. कि बिफोर इंजेक्शन देने से पहले 5 मिनट पहले आपको वो उसको क्या करना है, स्टेरल वाटर पर इंजेक्शन में वो सिरिंज डाल के वाटर लेके फिर आपको रिकंस्टिट्यूट करना है उसको, मतलब जो भी सॉल्यूशन होगा, सस्पेंशन होगा. ठीक है, सिंगल डोज कंटेनर फॉर स्टेरल वाटर पर इंजेक्शन इज यूज्ड फॉर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ स्टेरल सॉलिड. The next type of water is a bacteriostatic water for injection. अभी देखो purified water for injection, sterile water for injection, bacteriostatic water for injection. So it is prepared by distillation, reverse osmosis. Again, the endotoxin limit is same, and it is used for multiple dose and single dose product. Then sterile water for irrigation. So irrigation means to wash the washing. कोई ऑर्गन आपको वॉश करना है तो उसके लिए, मान लीजिए आपका ब्लीडिंग होगा, इंटरनल ब्लीडिंग, तो उसको साफ तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए स्टेराइल वाटर फॉर इरिगेशन. सो इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन रिवर्स ऑस्मोसिस. अगेन द एंडोटॉक्सिन लिमिट इज सेम. ओके, एंडोटॉक्सिन लिमिट इज सेम, एंड इट शुड बी लेबल्ड एज अ solution for irrigation only, not for injection. For irrigation only you have to label it. Then sterile water for inhalation. मतलब inhalation मतलब आपको inhale करना है. So again prepared by distillation reverse osmosis. It should have endotoxin limit 0.5 endotoxin unit per ml for inhalation therapy only, not for injection. Then water for hemodialysis. Again it is prepared for reverse osmosis distillation. कि डायलिसिस करना है आपका ब्लड प्यूरिफाई करना है, हीमोडायलिसिस. सो दैट फॉर दैट पर्पस वाटर फॉर हीमोडायलिसिस. सो इट शुड हैव ए एंडोटॉक्सिन लिमिट विद इन 2 एंडोटॉक्सिन यूनिट पर ml. ड्रिंकिंग वाटर फॉर पेशेंट अंडरगोइंग हीमोडायलिसिस. नेक्स्ट वन,
एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन द कमर्शियल पेरेंटल प्रोडक्ट्स, कि ऐसा नहीं कि आपने ड्रग सीधा लिया और डायरेक्टली उसको बना दिया सस्पेंशन में, वैसा नहीं होता। सोलिबिलिटी नहीं होता, जो एपीआई होता है आपका, so your API has a problems during solubility, so various excipients they are used in the production of your parenteral products. So what are they? So antimicrobial preservative, then stabilizers, then solubilizers, then your chelating agents, so etc etc. So we'll see one by one. So first, excipient used in the commercial parenteral formulations. So here name of excipient and concentration is given. So first one, antimicrobial preservative. Antimicrobial preservative. So I have told you these antimicrobial agent or preservative, they are only added in a multiple dose container, not a single dose container or large volume पेंटर्स को। इसको किस में ऐड करना है? मल्टीपल डोज कंटेनर में, ठीक है। So they are added in a multiple dose vial and are often included in a formulation to be sterilized by marginal process or made by aseptic manipulation. So antibacterial agent substances are not used in the large volume parenterals and single dose container, याद रखो. Now, which kind of antibacterial agents are used in the parenteral products? So first one is benzalkonium chloride. So it is used in the concentration of 0.01 weight by weight. Then methyl paraben, so 0.001 to 0.018. Okay, ये क्वेश्चन आ चुका है. So how, in which concentration methyl paraben is used as a antibacterial agent in commercial parenteral products? So it is a 0.01 to 0.018. Then myristil gamma picoleum chloride, so it is used in the concentration of 0.17%. Then phenyl mercuric nitrate 0.001%. Then propyl paraben 0.005 to 0.0035. फिनॉल 0.065 टू 0.5, ये कॉन्सेंट्रेशन में उसको यूज कर सकते हैं. सो मोस्टली बेंजोअल्कनियम क्लोराइड इज यूज्ड, पैराबेन्स आर यूज्ड, एंड दिस okay, this parabens and phenyl parabens and benzoylconium chloride is mostly used. याद रखो, पैराबेन में दो है भाई, मिथाइल पैराबेन है, प्रोपाइल पैराबेन है. आर यू गेटिंग और नॉट? हेलो. नाउ सोलिबिलाइजर्स, वेटिंग एजेंट एंड एमल्सिफाइंग एजेंट. मतलब आपको अगर आपका अगर सॉल्यूशन बनाना है, तो अगर आपका ड्रग सोलिबल है तो इट्स ओके, लेकिन आपका ड्रग सोलिबल नहीं है तो फिर आपको सोलिबिलाइजर यूज करना पड़ेगी, वेटिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा. सो इफ यू वांट टू prepare a parenteral suspension, then you have to use wetting agent. Then if you want to prepare a parenteral emulsion, then you have to use emulsifying agent. So to increase the solubility, they acts as a co-solvent, wetting agent and solubilizing agent. So what are those? These are nothing but the diethyl acetamide. It is used in the concentration of 0.01. Then dioctyl sodium sulfosuccinate, it is used in the concentration of 0.015. Then glycerin, it is used in concentration of 14.6 to 25. Glycerin. Polysorbate 20, 0.01 concentration. Polysorbate 80, polysorbate 40, 0.01. Polysorbate 80, 0.05. Polyethylene glycol 300. Mostly these polysorbates and glycerin is used. Glycerin, polysorbate and propylene glycol. These are the mostly used as a solubilizer, wetting agent and emulsifier. These are. Okay. Then next, buffer. Buffer. What is buffer? Buffer is nothing but it is a salt of weak acid and its conjugate base. What is buffer? Buffer is nothing but the salt of weak acid and its conjugate base in equal concentration. So buffer is the nothing but the, it will reduce the change in the pH. ठीक है. आपका pH is an important consideration in the parenteral formulation, because pH is see, if your drug product is stable at a particular pH, if any change in the pH, that will alter the stability of your preparation. So that's why pH is very important, and that's why to maintain the pH you have to use various buffers in your pharmaceutical parenteral formulations. Okay, so buffers are used to maintain the pH. Alteration of pH significantly causes the degradative reaction, means stability problem. Okay, degrade हो सकता है आपका ड्रग,
सो फॉर एग्जांपल जो मोस्ट ऑफ द पेप्टाइड्स होते हैं पेप्टाइड इंजेक्शन की, so peptide will be stable at a particular pH. So any change in the pH will cause deterioration or degradation of that peptide or active ingredient. So that's why you have to use buffer. So what kind of buffers you can use? Benzoic acid and sodium benzoate. You can use this sodium benzoate and benzoic acid. Then sodium citrate can be used in the 4% concentration. Then sodium bicarbonate can be used in 0.005% concentration. The next one is a bulking substances or tonicity modifier. Okay, they will contribute the isotonicity and will also reduce the pain at the site of injection. So what are they? So they will increase the bulk. Okay, so glycerin is lactose, mannitol, dextrose, sodium chloride. So sodium chloride is mostly used as a tonicity adjuster. Glycerin is used in the 1.6 to 2.25 concentration. Lactose, mannitol, dextrose. Now there is one question. In case of फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट, जो फ्रीज ड्राइंग के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है आपको, या फिर आप ये भी बोल सकते हो सॉलिड फॉर इंजेक्शन, जैसे सॉलिड पाउडर होता है वो इंजेक्शन के लिए फ्रीज ड्राइड सॉलिड. तो ड्यूरिंग द फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस, सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बल्किंग एजेंट इन द फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट, दैट इज नथिंग बट द सोडियम क्लोराइड. ठीक है, सोडियम क्लोराइड उसको मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन सोडियम क्लोराइड जब यूज करते हैं फ्रीज ड्राइंग में तो क्या होता है कि उसका श्रिंकेज होता है वो पाउडर का. सो दैट्स व्हाई अल्टरनेटिव लाइक मैनिटॉल इज यूज्ड, डेक्सट्रोज इज यूज्ड, स्टार्च इज यूज्ड, ये भी होते हैं. लेकिन मोस्ट कॉमनली सोडियम क्लोराइड होता है. और उसमें उसमें और भी है, डाइकैल्शियम फॉस्फेट है, डाइकैल्शियम और मोनोकैल्शियम डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट एंड मोनोबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट. सो दे आर आल्सो टू salts. They are used as a bulking agent in the your freeze dried product. याद रखो, ये यहाँ पे लिखा नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको. डाइकैल्शियम फॉस्फेट एंड डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट and diabasic monobasic calcium phosphate. Okay, so they are also used widely as a bulking agent in the freeze dried product, but most commonly used is sodium chloride. To replace the sodium chloride you can use mannitol. यहाँ पे बुक में दिया है लैकमन में वो, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं, मैं बोला. Next one is suspending agent. So if you want to prepare a parenteral suspension, then you have to use suspending agent. So you can use gelatin methyl cellulose in a concentration of 2, 0.03 and 1. Like this. Concentration छोड़ो, याद नहीं रखा होगा बेचारे. Gelatin methyl cellulose, polyethylene glycol 4000, sodium carboxymethyl cellulose. So this sodium carboxymethyl cellulose is not a suspending agent, but it is a protective colloid. Remember, protective colloid. ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे आपको. सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड यूज्ड इन द पेरेंटल सस्पेंशन. सो सेलुलोज जो है, सेलुलोज इज अ कार्बोक्सिमेथाइल सेलुलोज इज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड. देन चिलेटिंग एजेंट. सो व्हाई देयर इज नीड ऑफ एडिंग चिलेटिंग एजेंट? ओके, सी योर पेरेंटल प्रोडक्ट्स सॉल्यूशन और रेट में भी आते हैं सॉल्यूशन सस्पेंशन, वो कहाँ पे पैक होते हैं? आपके ग्लास कंटेनर में होते हैं या फिर प्लास्टिक कंटेनर में होते हैं. सो ग्लास कंटेनर में अगर लीकेज हो गया, मतलब लीचिंग हो गया, अगर उसने कंटेनर ने रिलीज किया क्या कि हेवी मेटल्स रिलीज किया, या फिर आपके प्रिपरेशन में ही कंटेमिनेशन आ गया हेवी मेटल्स का, तो दैट शुड बी स्कैवेंज्ड, दैट शुड बी, उसको पकड़ना पड़ेगा ना. तो स्कैवेंजिंग एजेंट आर यूज, चिल्डिंग एजेंट आर यूज. सो सोडियम सोडियम ईडीटीए, ये गलत हो गया स्पेलिंग. सोडियम ईडीटीए और सोडियम ईडीटीए यूज करते हैं चिल्टिंग एजेंट. उसके बाद डाइसोडियम कैल्शियम ईडीटीए वो भी यूज करते हैं. और स्टेबलाइजर्स लाइक क्रिएटिनिन, ग्लिसरीन, नाइसिनामाइड, दे आर यूज्ड एज स्टेबलाइजर. लोकल एनेस्थेटिक, आपको इंजेक्शन देना है, इंजेक्शन के टाइम पे पेन भी होता है, तो वो पेन ना हो इसलिए इसका भी ध्यान रखा जाता है. तो वो पेन ना हो इसलिए लोकल एनेस्थेटिक भी ऐड करते हैं. सो समटाइम्स बेंजील अल्कोहल और प्रोकेन, benzyl alcohol or procaine hydrochloride, they are used in the injection as a local anesthetic in a concentration of 1%. Then next one is the antioxidants. So antioxidants means they will prevent the oxidation of your product in the formulation. ठीक है, जो भी आपका API ड्रग है
वो सॉल्यूशन में है आपका, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इनकरेज होता है, हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन लाइक दैट, सो यू हैव टू यूज एंटीऑक्सीडेंट फॉर दैट। So they are used in the parenteral preparation. They are used to protect the therapeutic active agent liable, which is liable to the oxidation, particularly at a accelerated condition. कि आपको स्टोर करना है हाई टेम्परेचर पे, मालूम नहीं इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होता है, नॉर्थ में टेम्परेचर कम होता है, साउथ में ज़्यादा होता है, साउथ में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ना हो जाए इसलिए एंटीऑक्सीडेंट आपको यूज करना है। सो यू हैव टू यूज एंटीऑक्सीडेंट टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ योर API in the formulation. So for that, so here are different kind of antioxidants. Depending upon their mechanism of action, they are classified here. इसमें ये चार्ट में आपका 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सो फर्स्ट वन इज नेम ऑफ कंपाउंड एंड यूजुअल कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कितना यूज करना, कॉन्सेंट्रेशन छोड़ो, आपको सिर्फ आपको इसका नाम याद रखना, नेम ऑफ कंपाउंड एंड इट्स मैकेनिज्म। सो फर्स्ट कैटेगरी एंटीऑक्सीडेंट which act as a reducing agent, means they will get oxidized in place of your drug। मतलब आपका फॉर्मुलेशन में वो, मान लीजिए कि एस्कॉर्बिक एसिड आपने एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज किया है और वहां पे एंटीऑक्सीडेंट एज ए एस्कॉर्बिक एसिड यूज किया है, तो वहां पे अगर कोई ऑक्सीडेंट आएगा तो एस्कॉर्बिक एसिड विल बी ऑक्सीडाइज्ड, नॉट योर ड्रग। So they will, so antioxidants acts as a reducing agent. As per ascorbic acid, sodium metabisulfite, then sodium sulfite, sodium bisulfite. So these are the reducing agent. So they get oxidized preferentially over your drug. Okay. Now second class antioxidants as a blocking agent. Okay. So by blocking in the oxidative chain reaction in which they are not usually consumed. So these antioxidants, they are not oxidized in the reaction, but they will block the oxidation. So ascorbic acid esters, then butyl hydroxytoluene, butyrated hydroxytoluene. Yes, hello, please mute yourself. Then tocopherol means vitamin E. So these are antioxidant, act as a blocking agent. The next one is chelating agent. They will form a complex with the catalyst responsible for the oxidation reaction. So example is EDTA, ethylene diamine tetraestic acid. Okay. Then synergistic, they will increase the effectiveness of antioxidant. मतलब ये these chemicals will not act as a direct antioxidant, but they will increase the efficiency of your antioxidant. They will increase the effectiveness of antioxidant. So phosphoric acid, tartaric acid, and citric acid, they are used. Is that clear or not? Hello. And now types of glass as per USP. Yeah, it is also very important. Okay. So USP has defined different type of glass. Those are used for parenteral products. So type 1, type 2, type 3. Okay. Type 1, type 2, type 3 and NP. Or it is also known as a non-parenteral. So type 1 glass is known as a highly resistant borosilicate glass. ये उसके ऊपर पूरा फोकस करो, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ऑलरेडी बहुत बार आ चुके हैं, अभी बार बार बोलना नहीं पड़ेगा मुझे। सो टाइप फर्स्ट ग्लास इज नोन एज अ हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास। ओके, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास। टाइप सेकंड ग्लास इज नोन एज अ ट्रीटेड सोडा लाइम, treated soda lime. Type 3 glass is a soda lime glass. Type 4 glass is a non-parenteral glass. It is a type 4. Type 4 glass is a non-parenteral glass. So general purpose soda lime glass. याद रखो उसका नाम और टाइप, अभी वन बाय वन देख लेते हैं। सो टाइप यहाँ पे क्या दिखाया है टेबल में, यहाँ पे टाइप फर्स्ट कॉलम में दिखाया है टाइप ऑफ ग्लास, उसका नाम क्या है, देन उसके लिए टेस्ट कौन सा है, टू चेक द लीचिंग प्रॉपर्टी, टू चेक द अल्कली रिलीजिंग प्रॉपर्टी। देन क्योंकि ग्लास कंटेनर का एक प्रॉपर्टी होता है, उसके जो स्ट्रक्चर होता है उससे अल्कली रिलीज होती है, जैसे सोडियम सिलिकेट में मैग्नीशियम होता है उसमें, तो that release of alkali should be within the limit. So to check that, you have to subject that glass container for test. So for that there are two tests. First one is a powder glass test and second one is a water attack test. ठीक है, पाउडर ग्लास टेस्ट में क्या करना है आपको कि जो ग्लास है आपका, जो व्हाइट कलर का ग्लास है,
तो वो आपको क्या करना है, उसका पाउडर करके 0.1 नॉर्मल एसिड में उसको डाइजेस्ट करना है और बाद में उसका टाइट्रेशन करना है कि कितना रिलीज हो गया अल्कली। ठीक है। वाटर अटैक टेस्ट में क्या होता है कि वाटर अटैक टेस्ट इज ओनली फॉर टाइप 2 ग्लास ट्रीटेड सोडा लाइम। मीन्स ट्रीटेड सोडा लाइम मतलब क्या कि इसके ये जो ग्लास होता है ट्रीटेड, तो इसको सल्फर डाइऑक्साइड का ट्रीटमेंट देते हैं, सरफेस ट्रीटमेंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। so so whatever the alkali present on the surface of glass, that will be neutralized. Okay, and that's why it is a highly resistant glass, treated soda lime. Okay, so here you have type your term, type of test, sample size and limit for the H2 super and general use. So type first glass is known as highly resistant borosilicate glass. Okay, type first glass is nothing but a highly resistant borosilicate glass. Okay, so it is evaluated by powdered glass test, powdered glass test. ठीक है, याद रखो. Then sample size, you have to take all the samples of container for the test. You have to take all the samples of container, you have to powder that container and you have to you have to carry out the titrations. ठीक है. तो limit of test of ml of is test super 0.02 normal. So your titration करने के बाद, so amount of 0.02 normal is to support required to required for the endpoint should be less than 1 ml. 1 ml होना चाहिए उसका. ठीक है. So this type first glass is used for buffered and unbuffered aqueous solution and for all other use इसके लिए यूज होते हैं. ठीक है. Now type second क्या है, treated soda lime. treated soda lime किसके यूज करेंगे, treated soda lime हाईली रेजिस्टेंस होता है टाइप सेकंड. देखिए. ठीक है. सो टाइप सेकंड क्लास के लिए टेस्ट होता है वाटर अटैक टेस्ट. मतलब इसमें क्या होता है कि जो सरफेस ट्रीटमेंट होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, इसमें सरफेस ट्रीटमेंट होता है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का, तो ये ज्यादा ये होता है. तो इसमें वाटर अटैक टेस्ट, इसमें कंटेनर को आपको, इसमें जो है कंटेनर को आपको पाउडर नहीं करना है, एज इट इज कंटेनर यूज करना है, उसमें वाटर डालना है, क्लोज करना है, ऑटोक्लेव करना है. ठीक है. तो कंटेनर कितना यूज करना है, 100 और लेस इफ मोर देन 100. अगर 100 कंटेनर है आपको तो उतने यूज करना है, अगर उससे ज्यादा है तो उससे कम करना है, लेस इफ इट इज मोर देन 100. सो द लिमिट फॉर टेस्ट ml. ठीक है. H2 सुपर का कितना लिमिट होना चाहिए, इससे ज्यादा H2 सुपर नहीं लगना चाहिए उसको, 0.7 ml, 0.2 ml. ठीक है. नाउ दिस काइंड ऑफ क्लास इज यूज्ड फॉर ड्राई पाउडर, स्टोरेज ऑफ ड्राई पाउडर, ओलियोजिनस सॉल्यूशन मतलब ऑयली सॉल्यूशंस, देन बफर्ड एक्वियस सॉल्यूशन pH लेस देन 7, इसके लिए उसका यूज करेंगे. नाउ टाइप 3 इज नोन एज अ soda lime glass, and for that you have to use powder glass test. Okay, and all containers you have to use, the limit should be within the 8.5 ml of your 0.2 normal H2 super is required to neutralize the alkali leach. ठीक है. मतलब क्या होता है कि जब पाउडर करेंगे आप उसको, जब पाउडर करके वो पाउडर वाटर में बॉईल करेंगे तो क्या होता है कि जो ग्लास होता है, ग्लास की सरफेस पे जो अल्कली वो रिलीज हो जाएगी, तो वो वाटर में आ जाएगी. बाद में वो फिल्टर करके आपको वो वाटर का न्यूट्रलाइजेशन करना है. तो नंबर ऑफ ml ऑफ H2 super required to neutralize that alkali released by glass is a standard. It should be within the limit. For highly resistant glass it should be less, it should be within the limit, that is 1 ml. Not more than 1 ml of 0.2 normal H2 super will be required to neutralize the that alkali release. Okay, type first. टाइप सेकंड में कितना है, उसी टाइप का टेस्ट करना है आपको, सिर्फ पाउडर नहीं करना है. यहाँ पे इंटेक्ट कंटेनर लेके उसमें वाटर डाल के ऑटोक्लेव करना है. सो ऑटोक्लेव करना है मतलब वो टेम्परेचर पे ऊपर क्या होगा कि ऑटोक्लेव उसमें जो वाटर है वो जो भी रिलीज होगा अल्कली वो वाटर में आएगा. सो यू हैव टू न्यूट्रलाइज दैट, एंड फॉर दैट न्यूट्रलाइजेशन द अमाउंट ऑफ H2 super 0.2 normal H2 super, it should be not more than 0.7 and 0.2. Okay. For type 3 glass it should not be more than 8.5 ml. Okay. Now type 3 glass is used for dry powder and oily vehicles. Okay. Now non-parenteral glass, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आया था एक बार, which one is a non-parenteral glass. So type
4, यहाँ पे टाइप 4 है. टाइप 4 glass is a non-parental glass. Okay, so again it is used for purpose. It is known as general purpose soda lime glass. ये याद रखो, general purpose soda lime glass. Type 4 glass is a general purpose soda lime glass. Okay, then the amount of 0.02 normal EST super required to neutralize the released alkali after powder glass test for this, it is 15 ml. 15 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लगना चाहिए EST super to neutralize the alkali release. Now this general purpose soda lime glass or type 4 glass is also known as non-parenteral glass. ENP जो लिखा है यहाँ पे, ENP मतलब non-parenteral, ठीक है. So non-parenteral and it is used for tablets, oral solutions, suspension, ointments and external liquid applications. ठीक है, are you getting or not? एक्चुअली क्या होता है, देखो जो पेरेंटल जो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल उसमें क्या होता है कि उसका जो सरफेस है, ग्लासेस का ग्लास है, उसका सरफेस न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय यूजिंग सल्फर डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट. सल्फर डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट, ठीक है. तो उसका जो सरफेस का अल्कली है, उसका सरफेस का अल्कली वो न्यूट्रलाइज किया जाता है. तो दैट्स व्हाई इट इज वाटर अटैक टेस्ट उसके लिए यूज किया जाता है, पाउडर ग्लास टेस्ट नहीं यूज किया जाता. ठीक है, उसका सरफेस वो ट्रीटेड सोडा लाइम मतलब क्या है, ट्रीटेड मतलब इट इज ट्रीटेड बाय सल्फर डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट. सरफेस ट्रीटेड, सरफेस का उसके सरफेस के ऊपर जितने भी अल्कली होगा वो न्यूट्रलाइज किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड से. ठीक है, सो फॉर दैट वाटर अटैक टेस्ट इज यूज्ड. इतना याद रखो कि type 2 glass is a treated soda lime glass and for that water attack test is there, and for the rest of type of glass powder glass test is there. समझा? Clear? Now next point. Next point is quality control test for evaluation of chemical resistance of glass. Now whatever container you are using, it may be either glass or plastic. So mostly two types of container are used in the parenteral. First one is glass and second one is a plastic. So they should have certain specification. उनका भी कुछ स्टैंडर्ड्स होना चाहिए कि ग्लास कैसा होना है कैसा नहीं. ऐसा नहीं कि ऑर्डिनरी पर्पज ग्लास आप यूज कर सकते हो. सो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ग्लास, ग्लास किस टाइप की होनी चाहिए, फॉर इवेल्युएशन ऑफ योर केमिकल रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास. मोस्टली ग्लास इज हाईली रेजिस्टेंट बट स्टिल एज द इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सिलिकॉन ऑक्साइड. ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है वो. तो जो ऑक्साइड्स होते हैं तो वो रिलीज होते हैं. ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड. सो they are present in the structure of glass. So they if glass is able to release that in your formulation, then your formulation will have your formulation pH will be affected, formulation will be contaminated. So that's why the quality control tests are there for that. Okay, so we'll see it one by one. Okay, so quality control test for evaluation of chemical resistance of glass. The amount of alkaline constituent leached or released from glass by purified water under the control evaluated temperature. मतलब क्या कि ग्लास जो है, ग्लास में आपको आपको देखना है कि ग्लास सुटेबल है या नहीं है. कैसे करेंगे उसका, तो यू हैव टू चेक दिस टेस्ट. इट इज नोन एज अ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर इवेल्युएशन ऑफ ग्लास रेजिस्टेंस. ओके, कि how much the glass is resistant, what is the resistivity of glass, को ग्लास कितना रेजिस्टेंट है. ठीक है, so for that you have different test. First one is a water attack test. ठीक है, so what is principle involved in this and what is the procedure. Okay, so mostly there are two tests, water attack test and powder glass test. ठीक है, पाउडर ग्लास टेस्ट है एक, आपने देखा है ऊपर में, पाउडर ग्लास टेस्ट और वाटर अटैक टेस्ट, दो टेस्ट होते हैं उसके लिए. सो पाउडर वाटर अटैक टेस्ट क्या है, इट इज परफॉर्म्ड ऑन द होल कंटेनर. क्या है, इट इज परफॉर्म ऑन द होल कंटेनर. यू डोंट हैव टू
break the container, and you don't have to make the powder of that container. It is performed on the whole container, and it is used only with the container that have been exposed to sulfur dioxide fumes under the control of humidity condition. मतलब सरफेस ट्रीटमेंट दिया है उसको, सल्फर डाइऑक्साइड का सरफेस ट्रीटमेंट दिया है. क्यों? क्योंकि ग्लास की सरफेस के ऊपर क्या होता है, अल्कली होता है, तो दैट अल्कली शुड बी न्यूट्रलाइज्ड एंड दैट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड. दैट्स व्हाई इट इज ट्रीटेड, सल्फर डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट होता है उसका. ओके, सो प्रिंसिपल इन्वॉल्व whether the amount of alkali is leached or not in the water after subjecting to a high temperature and pressure. मतलब ये जो कंटेनर है आपका, ये ग्लास है, ये ग्लास, उसमें क्या करना है, वाटर डालना है आपको, प्यूरिफाइड वाटर और डिस्टिल वाटर, और बाद में उसको सब्जेक्ट करना है. वो कंटेनर में वाटर भर के आपको एटोक्लेव करना है. एटोक्लेव करने के बाद, एटोक्लेव करना है मतलब क्या है, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट, 15 LBBS प्रेशर, 15 पाउंड प्रेशर. तो वो प्रेशर में वो कंडीशन हो गया ना, टेम्परेचर बढ़ा है, वहाँ पे प्रेशर है, तो उस टाइम पे वो ग्लास विथस्टैंड करता है कि नहीं, कितना रेजिस्ट करता है वो टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन को. नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ाया तो पूरा अल्कली लीच कर देना चाहिए, नहीं. ओके, फॉर दैट यू हैव टू यूज वाटर एडेक्टिव्स. ओके, सो इन दिस what is the procedure? Containers are filled with the 90% of their capacity with the water. Okay, containers are filled with the 90% capacity of with the water, and then the container are subjected to autoclaving for 121 degrees Celsius for 30 minutes at a pressure of this 50 psi. Then you have to decant all the liquid, मतलब liquid जो है, जो वाटर है वो टेक आउट करो, उसमें का 100 ml सॉल्यूशन ले लो, एंड इट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट द 0.02 नॉर्मल एच सुपर. और इसका लिमिट आपको बोला है कितना है, 1 ml. कितना है, 1 ml. नहीं, जो आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था ना आपने, ये देखो, ट्रीटेड सोडा लैम्प के लिए कितना है, 0.7 ml. सो लिमिट ऑफ टेस्ट ऑफ ml ऑफ 0.2 नॉर्मल एस्टोस पर 0.7 ml. ठीक है. सो जो भी है, वाटर एडेक्टिव्स में क्या करना है आपको, वाटर डाल के ऑटोक्लेविंग करना है उसका, और जो भी वाटर है उसमें 100 ml लेके टेस्ट करना है. यू हैव टू न्यूट्रलाइज अगेंस्ट द H2SO4. Okay, so the amount of 0.2 normal H2SO4 required to neutralize such kind of water should be within the limit, less than 0.7 ml of H2SO4 is required. तभी वो यूज कर सकते हैं आप, नहीं तो यूज नहीं कर सकते. मतलब इसमें से जो अल्कली रिलीज होगा ना, वो लिमिट में होना चाहिए. वो कैसे चेक करेंगे आप, वाटर डालो उसमें, वो कंटेनर को ऑटोक्लेव करो, बाद में वो वाटर ले लो, उसका 100 ml ले लो, और टाइट्रेशन करो किसके साथ, H2SO4 के साथ, 0.2 normal H2SO4. Now, amount of H2SO4 required to neutralize the alkali released by the glass in the water. So that will determine the resistance of that glass. Okay, so that should be limit. The next one is a powder glass test. इसमें क्या होता है, performed on a grounded or sized glass particle. मतलब यहाँ पे कंटेनर को ब्रेक करना है आपको, पाउडर करना है उसका. ठीक है, पाउडर करना है. Whether the amount of alkali is leached or not in the water after subjecting to high temperature and pressure condition. ये पाउडर में क्या करना है, वाटर डालना है आपको, और उसको फिर ऑटोक्लेव करना है. So 10 gram of powder glass plus 50 ml of purified water in conical pass and subject to autoclave at 121 degrees Celsius for 30 minutes. Cool the content under running tap water and add 15 ml of purified water and titrate against the 0.2 normal H2SO4. और इसका लिमिट कितना होना चाहिए, यहाँ पे 1 ml है ना, 1 ml फॉर टाइप पर ग्लास. ठीक है. देन 8.5 ml फॉर टाइप 3 ग्लास, 15 ml फॉर टाइप 4 ग्लास. इसका लिमिट आ गया समझ में आई? हेलो. ओके, नाउ amber color glass is made by using addition of iron oxide in the glass. ये याद रखो, एज इट इज लाइन याद रखो ये. ठीक है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अंबर कलर ग्लास, अंबर कलर ग्लास इज मेड बाय एडिशन ऑफ आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड जो होता है वो ऐड करते हैं किसमें, ग्लास में, टू मेक द ग्लास अंबर कलर. जो नॉर्मली ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है आपका, सो व्हाट हैपेंस, सो इन द ट्रांसपेरेंट ग्लास
योर जो यूवी रेज होते हैं या फिर जो भी लाइट होता है, सो लाइट कैन ट्रांसफर इनटू द ग्लास इन द ट्रांसपेरेंट ग्लास. ओके, सो लाइट कैन अफेक्ट द our formulation, so by the photo oxidation. So photo oxidation हो सकता है, जो लाइट अगर अंदर आपके प्रोडक्ट पे, those are the photosensitive ingredient. If your formulation consists of photosensitive or light sensitive ingredients, then it can be oxidized by photo oxidation. If the light 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 get, ठीक है, लाइट उसके ऊपर गिरेगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका. टू प्रिवेंट दैट यू हैव टू कन्वर्ट ट्रांसपेरेंट ग्लास इनटू अम्बर कलर ग्लास टू protect the your formulation from light. So for that you can make amber color glass by adding the iron oxide. जो ट्रांसपेरेंट बॉटल होती है, और देखो आप कोई कुछ बॉटल ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ बॉटल जो होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं. ब्राउन कलर मतलब वहाँ पे आम्बर कलर बोलते हैं उसको. सो आम्बर कलर ब्राउन, उतना भी ब्राउन नहीं रहता वो. ठीक है, तो आम्बर कलर कैसे बनाते हैं? बाय अपॉन एडिशन ऑफ आयरन ऑक्साइड. जब ग्लास बनाते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड का, तो तभी उसमें आयरन ऑक्साइड डालते हैं ताकि वो ट्रांसपेरेंट ना बने, वो आम्बर कलर का बने. ठीक है, याद रखो, कभी वो ये पूछ लेते हैं. सो आयरन ऑक्साइड इज यूज्ड इन द ग्लास फॉर मेकिंग आम्बर कलर ग्लास. इन साइज ऑफ कंटेनर, सिंगल डोज कंटेनर शुड बी, सिंगल डोज का कंटेनर का कितना साइज होना चाहिए? 1 ml, 1 ml से लेके 1000 ml तक, लीटर तक होता है. और मल्टीपल डोज का कंटेनर का साइज कितना होता है? अप टू 30 ml. ये क्या होगा? नेक्स्ट वन इज रबर क्लोजर. नाउअडेज इट इज नॉट मोस्टली यूज्ड, बट जो पहले का जमाना था उसमें कैसा, जब हम हमारे टाइम पे, जब हम बचपन में थे और जब सलाइन लगाने को जाते थे, तो वहाँ पे ग्लास कंटेनर रहता था, एक ग्लास की बॉटल रहती थी 1 लीटर की, और उसके ऊपर एक रबर क्लोजर रहता था. ठीक है, आजकल जो प्लास्टिक कंटेनर यूज होते हैं, रेडी यूज एंड थ्रो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं आजकल. ओके, सो जो पहले थे उसमें रबर क्लोजर वो यूज करते. सो रबर क्लोजर दे आर यूज टू सील द ओपनिंग ऑफ कार्ट्रिज ऑफ, ओके, दे आर यूज टू सील द ओपनिंग कार्ट्रिज ऑफ योर लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स. और योर इसका, अब देखो वाइल भी देखो, आप वाइल के लिए ऊपर एक रबर क्लोजर लगा होता है. They are used to seal the opening of cartridge. Natural rubber or synthetic polymer can be used. Sulfur is used as a vulcanizing agent. 2-marpactobenzothiazole is also, ये आपने देखा है when we were studying the material construction, and in that we have seen this. Sulfur is used as a vulcanizing agent. Then 2-marpactobenzothiazole is an accelerator. जिंक इज यूज्ड एज एक्टिवेटर. इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है. कार्बन ब्लैक और लाइमस्टोन इज यूज्ड एज अ फिलर. एंटीऑक्सीडेंट एंड लुब्रिकेंट आल्सो एडेड इन द रबर टू गेट अ डिजायर्ड कलर, डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ रबर टू फॉर्म ए रबर क्लोजर. सल्फर क्या है? वल्कनाइजिंग एजेंट है. तो वल्कनाइजेशन क्या होता है उस टाइम पे मैंने बोला था, अगर नहीं याद तो वो आ जाके वीडियो देख लो. मार्कअप टू बेंजोथाइazole इज अ एक्सेलरेटर. जिंक इज यूज्ड एज अ एक्टिवेटर. ये लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था जिंक का. Carbon black limestone is used as a filler, antioxidant, and lubricant also can be added in the rubber. Two general compatibility problem with the rubber closure, namely leaching of ingredient from the rubber compound and subsequent reaction with the ingredient of the product. इसमें दो प्रॉब्लम होते हैं रबर क्लोजर के. एक का इनकम्पेटिबिलिटी होता है कि रबर से क्या होता है, लीच होता है इंग्रेडिएंट. रबर का जो इंग्रेडिएंट है कभी कभी लीच होता है, वो रिलीज करता है एंड वो रिएक्ट होता है आपके प्रोडक्ट के साथ. एंड द रिमूवल ऑफ इंग्रेडिएंट आर बाय प्रोडक्ट बाय सॉर्प्शन. मतलब रबर का एक फिनोमेनन होता है कि एब्सॉर्प्शन. तो इट विल एब्सॉर्ब द, समटाइम इट विल एब्सॉर्ब द your formulation. एंड वेपर ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम. कि रबर में दो तीन प्रॉब्लम होते हैं. क्या? लीचिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, देन परमिएबल टू वेपर, देन सॉर्प्शन ऑफ योर कंपाउंड. Rubber closures are usually washed by mechanical agitation in the tank with a hot detergent solution such as 0.5%, such as 0.5% sodium pyrophosphate, and then rinse with water per injection. मतलब ये आपको यूज करने से पहले रबर क्लोजर को क्या करना है? प्रॉपरली वॉश करना है.
कैसे वॉश करेंगे? इन द एजिटेशन टैंक, बड़ा सा टैंक लेना है, टैंक में उसको वॉश करते हैं पॉइंट विद द 0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट, यहाँ पे 0.5% है pyrophosphate, and rinse it with the sterile water for injection. Then use administration devices. एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइसेस मतलब क्या कि आपका जो लार्ज वॉल्यूम पेनिट्रल्स है या स्मॉल वॉल्यूम पेनिट्रल्स, उसको आपने बना तो लिया लेकिन उसको एडमिनिस्टर तो करना है, उसके लिए सिरिंज लगेगा, उसके लिए आपको सिरिंज लगेगा 2 ml 5 ml, उसके लिए नीडल लगेगा, उसके लिए अगर लार्ज वॉल्यूम पेनिट्रल है तो उसके लिए इंट्रावेनस सेट लगेगा, आईवी सेट जो नली होती है सलाइन की वो लगेगा. सो एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइसेस, एडमिनिस्ट्रेशन सेट फॉर लार्ज वॉल्यूम पेनिट्रल्स, hypodermic needles, syringes, plastic irrigation solution bottles, plastic large volume parenteral container, transfer sets, transfer needles, etc. etc. Then nylon and silicone rubber are mostly used for intravenous catheter. Remember, nylon and silicone rubber are used for intravenous catheter. ठीक है, जैसे पॉलिश कैथेटर होता है, आप पॉलिश कैथेटर यूरिन डिटेंशन में यूज करते हैं, जो भी कैथेटर होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं? नायलॉन एंड सिलिकॉन रबर. आपको सलाइन लगाते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे रबर का कैथेटर होता है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा रबर यूज करना है? नायलॉन एंड सिलिकॉन. कैथेटर एंड स्टेनलेस स्टील इज यूज्ड फॉर द हाइपोडर्मिक निडल. हाइपोडर्मिक निडल कहाँ से बनता है? स्टेनलेस स्टील का बनता है निडल. समटाइम्स एल्यूमिनियम आल्सो यूज्ड फॉर द हब एंड कैनोला ऑफ द निडल. जो कैनोला होता है निडल का, उसके लिए एल्यूमिनियम यूज करते हैं. प्लास्टिक कंटेनर एक्सेप्ट लो डेंसिटी polyethylene and polystyrene can be autoclaved. There are different kind of plastics. polyethylene इसका वैरायटी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज होता है, polyethylene polystyrene. तो इसको आपको देखना है तो बुक में दिया है different different varieties of rubber, but mostly polyethylene and polystyrene rubber are used because they can be autoclaved. They have been formulated with a low amount of plasticizer like polyethylene, polypropylene, uh, polypropylene is mostly used. See, polypropylene type of plastic is mostly used because they have a high melting range and they can be autoclaved and they are relatively less permeable to the vapors. ऐसा नहीं कि आपने सलाइन बनाया प्लस जो पॉलीप्रोपिलीन का जो कंटेनर उसमें डाला तो बाहर को वेपर अंदर नहीं जाना चाहिए ना उसमें, तो दैट इज इनपर्मिएबल टू gases and vapor. So polypropylene is mostly used and it can be autoclaved. नहीं तो नॉर्मल प्लास्टिक आपको ऑटोक्लेव में डालेंगे तो वो ये हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा. लेकिन ये जो है पॉलीप्रोपिलीन उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है 165 डिग्री सेल्सियस एंड दैट्स व्हाई it can withstand with the autoclaving. Then flexible polypropylene consists of a flexible polyethylene. Flexible polyethylene containers are used for ophthalmic solution. ophthalmic solution जो होता है जैसे आपका आई ड्रॉप हो गया, आई लोशन हो गया वो, सो दे फॉर दैट फ्लेक्सिबल पॉलीथिलीन कंटेनर्स आर यूज्ड. फ्लेक्सिबल पॉलीविनाइल क्लोराइड बैग्स आर यूज्ड फॉर इंट्रावेनस सॉल्यूशंस. ठीक है, आपको इतना याद रखना है पैरेंटल प्रोडक्ट का एक दो चार कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए. सो फर्स्ट वन, इट शुड बी in a pure form. The drug should be in a pure form, free from any physical, microbial or chemical contamination. Then the product must be sterile. The product must be free from pyrogens. Okay, that is the requirement, pre-requirement of your parenteral product. Then जो कंटेनर यूज करते हैं, कंटेनर का भी रिक्वायरमेंट होता है, ग्लास कंटेनर का रिक्वायरमेंट. इट शुड बी कंपेटेबल, इट शुड बी इनर्ट, इट शुड नॉट रिलीज अल्कली. ऐसा बहुत सारा है आपके बुक में दिया है, वो देख सकते हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज लाइक दैट. So I think this is enough for today. We will see rest of the remaining points tomorrow.